Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. So children, this is your English reader book and the name of the book is Language Odyssey, our 21st century reader's guide. So children, today we are going to do chapter number 4 of your book. And the name of the chapter is The World in a Wall. So, wall. What is a wall? Wall is the surrounding जिसको मिला के एक room बनता है. So here the writer is talking about a wall जिसके अंदर एक पूरी दुनिया है. So let's see what's written here. So children, this is an extract from My Family and Other Animals by Gerald Durrell. So Gerald Durrell is the writer of this, and this extract is taken from My Family and Other Animals. So this is a book, and it's taken from here. The writer, as a boy, takes home a scorpion. Scorpion means, आप देख सकते हो, this is a picture of a scorpion. So scorpion is बिच्छू जिसे आप कहते हैं. So this is the story of a scorpion जो writer अपने घर ले जाते हैं and her babies और उसकी babies को भी. Not knowing the chaos they would create. So उस scorpion को घर ले जाने के क्या क्या consequences हो सकते हैं, ये सब बिना सोचे जो हमारे writer हैं scorpion और उसकी baby को घर वापस ले गए. Let's read the story. One day, I found a fat female scorpion in the wall. So now the writer has started the story. एक दिन क्या हुआ? The writer found a female scorpion wearing what at first glance appeared to be light brown fur coat. So ऐसा लग रहा था कि उस scorpion ने अपनी body पे light brown color का fur coat पहन रखा है. Closer inspection proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's fur. So, अब stranger को लगा कि mother scorpion ने एक brown color का coat पहना है, but जब उसने बहुत नजदीक से देखा उस scorpion को, तो उसने क्या देखा कि वो जो garment था, वो जो कपड़ा उसे जिसे वो कपड़ा समझ रहा था, वो क्या था? वो स्कॉर्पियन के छोटे छोटे बेबीज थे जो अपनी मदर की बॉडी से चिपके हुए थे. I made up my mind to smuggle them into the house. So मैंने अपना माइंड बना लिया था, मैंने सोच लिया था कि मैं इन स्कॉर्पियंस को अपने घर लेके जाऊंगी. And up to my bedroom so that I might keep them and watch them growing up. So writer thought कि चलो इन्हें अपने घर लेके चलते हैं और इन्हें बड़ा होता हुए देखूंगा, मैं अपने बेडरूम में रखूंगा और रोज इन्हें बड़ा होता हुआ देखूंगी. With great care I maneuvered. So बहुत ही ध्यान से the writer maneuvered the mother and family into an empty matchbox. So अब writer ने एक छोटे से matchbox में mother और उसकी family को बंद कर दिया. And then hurried to the villa. और अपने घर की तरफ निकल गए. It was rather unfortunate that just as I entered the door, so जैसे जो हमारे राइटर है वो अंदर घुसे अपने घर के, lunch should be served. So वो lunch time था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece. So जो हमारे राइटर है उन्होंने क्या किया, मैच बॉक्स को बहुत ही केयरफुली मैंटल पीस पे मीन्स जो टेबल थी उनके डाइनिंग रूम में वहां पे उन्होंने रख दिया. इन द ड्राइंग रूम. सो ड्राइंग रूम में soon that the scorpions might get plenty of water. So ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे स्कॉर्पियंस को बहुत सारी एयर मिल सके ताकि वो ब्रीद इन कर सके. Then I made my way to the dining room and joined the family for the meal. So अब मैंने जो है डाइनिंग रूम की तरफ गया और अपनी फैमिली के साथ लंच करने लगा.
dawdling over my food, feeding Roger superstitiously under the table and listening to the family arguing. I completely forgot about my exciting new facts. So, अब मैं अपने फूड को खाते वक्त और रॉजर इज द ब्रदर ऑफ द राइटर, सो उसके साथ मैं टेबल के अंदर कुछ बातें कर रहा था, अपनी फैमिली को सुन रहा था और इतना करते करते क्या हुआ, मैं अपना जो न्यू पेट था उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया. At last my brother Larry, having finished, decided to finish his task of the day. So अब जो मेरा ब्रदर था लैरी, उसका खाना फिनिश हो चुका था, तो अब उसे लास्ट जो वर्क करना था उसकी तरफ वो बढ़ चुका था. That is to burn the waste papers. So उसे जो है ऐसा एडवाइस किया गया था, ऐसा बोला गया था, उसे जो भी वेस्ट पेपर हैं उसे जो है क्या करना है, बर्न कर देना, जला देना है. To do this, he fetched the matchbox from the mantelpiece. अब जो उसके भाई को क्योंकि आग जलानी थी तो उसने वो मैच बॉक्स उठा लिया जो हमारे राइटर ने mantelpiece पे रखा हुआ था. I was him interestingly as still taking glibly he opened the matchbox. So हमारे जो राइटर है अपने भाई को मैच बॉक्स ओपन करते हुए देख रहे हैं and they were talking also. Now I maintain to this day that the female scorpion meant no harm. So, अब जो राइटर है उन्हें ऐसा लगा कि जो फीमेल स्कॉर्पियन है उसे भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे. She was upset and annoyed at being shut up in a matchbox for so long. So मेरी जो स्कॉर्पियन थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत देर पहले उसे मैच बॉक्स में रखा था, उसके बाद मैं डिनर लंच करने चला गया और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. सो मेरी जो स्कॉर्पियन थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. एंड सो शी chose the first change to escape. सो अब जो मेरी स्कॉर्पियन थी उसने सोचा कि जल्दी से मैं यहाँ से भाग सकूँ. She crawled out of the box rapidly. सो जल्दी जल्दी जो स्कॉर्पियन थी वो बॉक्स में से निकली. Her babies clinging on, और उसके बेबीज अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर चिपके हुए थे, लटक रहे थे. And scuttled on the back of Larry's hand, और वो मैच बॉक्स में से निकल के लैरी के हैंड के पीछे चली गई. There, not quite certain what to do next, she paused. Her sting curved up. So जैसे उसके हाथ के पास पहुंची, थोड़ी देर बाद वो रुक गई और उसका जो स्टिंग था वो अपनी शेप में आ गया, वो कर्व शेप में आ गया. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज. लैरी जिसके हाथ पे वो चढ़ी हुई थी उसने उस स्कॉर्पियन के पैरों के जो चलने की जो मूवमेंट थी वो उसे फील हो रही थी. ग्लैंस डाउन टू सी व्हाट वाज दैट एंड फ्रॉम दैट मूवमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज्ड. सो अब लैरी के हाथ पे जब वो स्कॉर्पियन चलने लगी तो लैरी ने अपने हाथ को देखा कि मेरे हाथ पे क्या है. सो जैसे उसने देखा तो क्या हुआ, सब चीजें कंफ्यूज होने लगी. लैरी uttered a roar of fright that made Logetizia drop a plate and brought Roger out from beneath the table. So लैरी ने जैसे ही उस स्कॉर्पियन को देखा वो क्या करने लगा, वो डर के मारे चिल्लाने लगा और जिसके वजह से लोगटेजिया ने अपना प्लेट गिरा दिया और जो रॉजर था वो क्या करने लगा, वो टेबल के नीचे से निकल के बाहर भागा है. बार्किंग वाइल्डली, चिल्लाता हुआ. क्या हो गया? With a flick of his hand, Larry sent the scorpion flying down the table. So अब जैसे उसके हाथ पे उसने देखा कि कुछ चल रहा है और वो एक स्कॉर्पियन है तो उसने अपने हाथ को ऐसे झटक दिया, मीन्स फ्लिक कर दिया. So जैसे उसने अपने हाथ को फ्लिक किया तो स्कॉर्पियन जो है उसके हाथ से कहाँ चली गई, डाउन द टेबल, टेबल के नीचे चली गई. And she landed midway between Margot and Leslie. So Margot और Leslie के बीच में वो चली गई.
scattering her babies like confettis as she thumped on the floor. So जैसे वो नीचे गिरी, उसके सारे बेबी जो थे वो हर तरफ स्कैटर हो गए. Angry at this treatment, the creatures sped towards Leslie. So जैसे वो स्कॉर्पियन को लैरी ने नीचे पटका, तो स्कॉर्पियन इधर उधर भागने लगी, उसके बच्चे सब तरफ स्कैटर हो गए, और जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियन क्या हो गई, गुस्सा हो गई, एंग्री हो गई. The creature sped towards Leslie. वो लेस्ली की तरफ गई. Her sting quivering. So अपने स्टिंग को मीन्स उसे डंक मारने के लिए. Leslie leapt to his feet, overturning his chair and flickered out with his napkin. So अब जो है लेस्ली ने देखा कि स्कॉर्पियन उसकी तरफ आ रही है, so वहां से वो भागा और उसने अपने चेयर को ओवरटर्न किया and flickering out with his napkin means hit out with his napkin. So उसने जो है नैपकिन उठाया और उससे उस स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश की. They sent the scorpion rolling across the floor towards Margot. So अब जैसे ही उसने जो लेस्ली ने क्लोथ मारा, तो स्कॉर्पियन क्लोथ की वजह से दूसरी तरफ चली गई. कहाँ चली गई? मार्गो की तरफ चली गई. Who let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. So जैसे मार्गो के पास वो स्कॉर्पियन गई, तो उसने इतना तेज चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रेल का इंजन बोल रहा हो. और ऐसी आवाज अगर रेलवे वालों को पता चल जाए, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. So यहाँ पे द राइटर इज सेइंग कि ऐसी आवाज किसे चाहिए? रेलवे वालों को चाहिए. उससे बेहतर आवाज कोई और नहीं निकालता. मदर कंप्लीटली bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos. So अभी तक जो है डाइनिंग रूम में एकदम शांति, सब शांति से अपना खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन एकदम से चीख चिल्लाहट मच गई, स्क्रीमिंग हो गई. तो मदर जो है क्या करने लगी, वो वापस आई उनको देखने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना सब चीख रहे. Put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium. And at that moment, Margot, in the vain attempt to stop the scorpion advance, hurled a glass of water at it. So मदर ने अपना ग्लास रखा जो से वो ला रही थी या वॉश कर रही थी, और उन्होंने क्या किया, वो टेबल के नीचे देखने लगी कि आखिर क्यों सब बच्चे चिल्ला रहे हैं. सो जैसे वो देखने लगी तो क्या हुआ, मार्गो उसी टाइम पे उसने एक ग्लास का पानी लिया और फिर स्कॉर्पियन के ऊपर डाल दिया. The shower measured the animal completely. अब जैसे ही पानी पड़ा उसे स्कॉर्पियन के ऊपर वो और ज्यादा गुस्से में आ गई. But drenched mother, drenched means गीली. So वो जो मदर थी, जो गीली मदर थी, who not being able to stand cold water, lost her breath and sat grasping, unable even to protest. So वो स्कॉर्पियन जो थी, क्योंकि वो गीली हो चुकी थी, तो वो ठंडे पानी को सहन नहीं कर पाई. उसकी जो ब्रेथ थी, उसकी जो सांसें थी, वहीं पे वो कम हो गई और वो आराम से बैठ गई. She was not able to protest. वो अपने एनिमीज के खिलाफ नहीं लड़ पा रही थी. The scorpion had now gone to ground under Leslie's plate. So अब जो स्कॉर्पियन थी लेस्ली के प्लेट के नीचे छुप गई. While her babies moved wildly all over the table. और जो उसके बेबीज थे वो टेबल में सारे तरफ घूम रहे थे. Roger ran round and round the room barking hysterically. So Roger जो था वो पूरे जो है कमरे में इधर से उधर भाग रहा था, चिल्ला रहा था. It's that boy again, bellowed Harry. So लैरी ने बोला ये वही बच्चा है फिर से. Look out, they're coming, screamed Margot. सब मार्गो चिल्लाई, देखो वो इधर आ रहे हैं. All we need is a book, roared Leslie. Don't panic, hit them with a book. So Leslie told that to kill the scorpion and its babies, let's
take a book. All we need a book, and all of you don't panic. Hit them with a book. What on the earth is the matter with you all? Mother kept asking, mopping her glasses. So mother अपने glasses को साफ कर रही थी कपड़े से और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतना चिल्ला रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो? It's that boy again. He will kill the lot of us. So सबने चिल्ला के क्या बोला कि ये वही लड़का है और ये हम सबको मार डालेगा. Look at the table, knee deep in scorpions. Stop screeching and get a book. For God's sake, by the grace of God, I was not bitten. So अब यहाँ जो सारे बच्चे वो मिलके चिल्ला रहे हैं. कोई एक बच्चा चिल्ला रहा है कि बुक लाओ, जल्दी लाओ, एंड भगवान के लिए बुक लाओ. गॉड सेक मीन्स भगवान के लिए कोई बुक लाओ और इससे जो है मारो. इसने मुझे अभी नहीं काटा है. Look out, there is another one. Quick, quick. So ये स्कॉर्पियन को देख के सब जगह भगदड़ मच गई पूरे कमरे में और उन्होंने जितने भी स्कॉर्पियन थे सबको ढूंढना शुरू कर दिया. Oh, keep quiet and get me a book or something. But how did the scorpion get on the table here? The naughty boy. Every matchbox in the house is a death trap. So यहाँ पे मदर ने पूछा कि सब शांत हो जाओ और एक बुक लेके आओ और tell me how this scorpion got on the table. ये scorpion टेबल पे कैसे आया? तो सबने क्या रिप्लाई दिया? That naughty boy. ये वही लड़का है, ये वही naughty boy है. और every matchbox in the house is a death trap. So इस घर में जितने भी matchbox आपको मिलेंगे सब क्या है? एक death trap है. Means किसी भी matchbox में से आपके लिए death निकल सकता है. Look out, it's coming towards me. Quick, quick, do something. Hit it with your knife. Go on, hit it. So all are crying something or the other. सारे लोग जो वहाँ पे थे उस कमरे में वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं. So किसी ने कहा कि देखो वहाँ पे वो है. दूसरे ने कहा कि जल्दी से कुछ करो और तीसरे ने कहा कि उसे नाइफ से मार दो. Go and hit it. Since no one had bothered to explain things to Roger was under the mistaken impression that the family were being attacked. So, since no one had bothered to explain means कि किसी ने भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि Roger was unmistaken under the mistaken impression that the family was attacked. So Roger को ऐसा जो है लग रहा था कि फैमिली को किसी ने अटैक कर दिया है, and that it was his duty to defend them. और उसे ऐसा लग रहा था कि फैमिली को सिर्फ वही बचा सकता है, so he can only defend his family. As Luguredzia was the only stranger in the room, he came to the logical conclusion that she must be the responsible party. So he bit her in the hand. So यहाँ पे जो ये गर्ल थी, she was the only stranger here. और लास्ट में सब एक जो है कंक्लूजन पे आए कि she must be responsible, she must be the responsible party. यही है वो responsible person है, and so he bit her in the ankle और उसके ankle में उसने काट दिया. This did not help matters very much. By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of clothing. So अब इतना कुछ होने के बाद जो बेबी स्कॉर्पियंस थे उन्होंने अपने आप को जो भी चीज उन्हें दिखाई दी उसके नीचे छुपा लिया. Eventually after
impassioned pleas on my part, backed up by mother. So जितने भी प्लीज थे वो मेरे ही पार्ट में आ रहे थे, सब मुझे ही बोल रहे थे. Backed up by the mother, Leslie's suggestion that the whole be slaughtered was squashed. So Leslie ने सजेशन दिया था कि जो ये है इससे क्या करना चाहिए, हमें स्क्वैश कर देना चाहिए. While the family still simmering with fright retired to the drawing room. अभी भी मेरी जो फैमिली थी वो डर रही थी और सब डर के हमारे ड्राइंग रूम में चली गई. I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in the teaspoon. So मेरे को पूरा आधा घंटा लगा किस चीज में, मैंने उन सारे बेबीज को गैदर किया एक टीस्पून, and returning them to their mother's back, और उन्हें वापस उनके मदर के पास छोड़ दिया. Then I carried them outside on a saucer and with utmost reluctance released them on the garden wall. So अब जो मैंने जो है उन्हें एक सॉसर में रखा, एक प्लेट में रखा और उन्हें वापस जो है मैं उसी वॉल पे लेके चला गया, गार्डन वॉल पे उसे मैंने छोड़ दिया. Roger and I went and spent the afternoon on the hill's side, for I felt it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again. So here the writer is saying कि अब जो है जब उसने उस स्कॉर्पियन को वापस वॉल पे छोड़ दिया तो रॉजर के साथ वो कहाँ चले गए, वो एक हिल साइड में चले गए. दोपहर का टाइम था तो वो हिल साइड में चले गए और उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब फैमिली को थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं. सिएस्टा मीन्स अ टाइप ऑफ नैप. तो दोपहर में जब थोड़ी देर के लिए हम सोते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिएस्टा. तो उसने सोचा, हमारे राइटर ने, कि चलो फैमिली को थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं बिफोर, इससे पहले कि वो मुझे दोबारा मिले या मुझे दोबारा देखे. So children, in this chapter we have learned we should be careful from dangerous animals and we should not harm them. Now let's come to take the correct options. We found the fat scorpion in a jam jar, the wall, a tree, or none of these. So the wall is the correct answer. Now the color of the scorpion was blue, black, green, chocolate brown, or none of these. So we can choose this answer because it was brown in color, so we can write chocolate brown. So like this, children, complete the rest of the questions here. Now let's come to the exercise. Here we have to read the sentences and answer the questions that follow. So we have to read this sentence, and what's the sentence? I completely forgot about my new exciting pets. So what do exciting new pets refer to? So here the new exciting pets refers to the scorpion and her babies. Now who is the speaker? The speaker here is the small boy. Like this, complete the rest of the questions. Now let's come to fill in the blanks. The writer as a boy takes home a dash and her babies. So the writer took home a scorpion and her babies. I dash the mother and family into an empty matchbox. So I maneuvered, MANOEUVERED. So I maneuvered the mother and the family into an empty matchbox. Now the rest of the questions, children, you have to do on your own.
Now let's come to the question and answers. So who is the writer? The writer is a small boy. And the next question is, what did he take home causing chaos? So he took home a scorpion and her babies. Next, what did the light brown fur coat? What did the light brown fur coat of the female scorpion actually consist of? So it consists of its babies. So like this, children, complete the rest of the questions. I hope that you have understood the chapter, and if you have any confusion, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lated.